Oh, One that's hears that as fine. well, See, that, there's yeah. 5 to 7% of uh, of women who have back pain after delivery, They do, yeah. right? The epidural does not increase their chances of having back pain. Okay, that's a natural phenomena anyway for that Right, there 5 or 5% to 7% will yeah. have low back pain. Some of them even for short time or whatever, leg pain. But that epidural does not change it. But if you have all the medicines, you know, all through the labor, all through delivery, even after the delivery, if the gynecologist has to stitch something, episiotomy, Yeah. they have no pain. You know, and they're walking epidurals. Here, because we don't have that specific medicine, we have to give other medicine in higher To compensate, concentration, yeah. right? And people feel weak legs, and there we give walking epidurals. They don't feel weak legs. So they feel the cramp. The women feels the cramp, and that's when we ask her to push, Yeah. and she pushes it without any pain. And also, there are few people who are very well in Karachi, in Pakistan. That was going to be my next thing, because a Right. lot of hospitals do have anesthesiologists and people who take Right. care of this. But if you still, ask there's for it. less people who are well trained in epidurals. Really? Right. I mean, in 3 years of my training, I almost did close to 1,000 epidurals before I was allowed to individually do on a person. Wow. So it That is wouldn't be very the case important here. that you know, I've seen all the problems, the complications, the epidural not working, it's working on one side. Oh, that's a horror story that happened to someone I So, know. you know, I saw it all during my training, and I knew how to fix it or what the problem was, because you see it every day, every day, every day. So then you know how to fix it. One is also getting the impression कि बहुत शदीद तकलीफ हो तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाएं for pain management. But there are other pains as well. Like I know people who have a constant pain in their leg, but it's at, you know, on their foot, and post delivery and post baby and stuff, and you know they've been told it's a vitamin D deficiency and whatever. But it does hinder your normal working Right, and you can, living life as well, right, because right. you can't run anymore. Every time they get up, sit up, there's excruciating pain, you know, in their foot. So people like that should come to you as well. People who have an issue. It's not just ke, I can't breathe. That's how much pain I'm in. It's like any disease. You know, if you don't treat sugar, it's going to go to 200, 300, 400, and you get heart attacks and kidney failure and eye problems. It is a disease, you know, you're not able to move your leg. That part is getting worse by itself, but you're also putting more pressure on your other leg. Yeah. So your other leg is getting hurt, your joints and your knees and maybe the nerves and stuff. Diagnosis is very, very important. Get it diagnosed. Why make that person prone to stroke? Migraine हो रहा था 3 दिन से, you know, फिर उनको फालिज हो गया. I mean, you hear this, you just don't look at it this angle. The problem with the pain is we don't have any measuring tool. Like blood pressure, we can say, you know, 120 by 80, or, you know, your cholesterol is 200 milligram per deciliter. Pain, it's just subjective. So the most important part in pain diagnosis is history. What we did abroad and what we are trying to do here is train a pain nurse so she can take part of the history, but still we need to spend at least 20 minutes, half an hour on our initial consultation to make sure we don't miss out any, God forbid, tumors, infections, vascular problems, other stuff that's going on. Because pain is just subjective, and the person, if it's burning or sharp, it makes a difference to us. We do have to wind up the interview, but one very important question that I'd like to ask you is, because a lot of people here depend on homeopathic medicine. They really believe in it. A lot of people also go in for acupuncture and alternative medicine. What would you say about that? Actually, I'm a believer of right, correct homeopathic medicine. Problem here, most people that I know do practice in Pakistan homeopathic medicine are not properly qualified. Right. If they want to try homeopathic, get your diagnosis, you know, make sure you don't have anything bad. You know, try yourself homeopathic medicine. There's nothing wrong in my view. Acupuncture, actually, it is part of some pain treatment. Again, if it's a properly trained professional, and we like to work together, like, you know, if somebody can treat
fibromyalgia better than I do, I rather send him there and get the patient the right person. Get yourself diagnosed. It's only fibromyalgia. It's not hepatitis C or God forbid something else, and that properly treated wherever you get help. So I actually tend to believe alternative medicine like magnet therapy and you know, ginkgo. I don't believe in that. Yes, thank you. Right. Thank you. With that, thank you so much for your time. Thanks a lot. We'd love to have you back on the show, Dr. Sajjad. Thank you very much for inviting me. I really need to get the word out, for people to get aware and get some help. Yeah. Thank you. Thank you for that. Thanks a lot. Thanks very much. And with that, time for a short break, but please do join us again after the break, because we will be talking to some patients who are living with pain and how do they manage it. So after the break. Welcome back from the break, and thank you so much for staying on the show with us today. As you know, we're talking about pain management. हमने पहले डॉक्टर सजाद से बात की थी कि वो किस तरह मैनेज किया जाता है तकलीफ़ को, लेकिन अब हम दो इंडिविजुअल्स और दो ऐसे लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो एक्चुअली बर्दाश्त करते आए हैं सालों से तकलीफ़, और उनकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आई है या बेहतरी आई है कि नहीं। तो हम मिलते हैं मीर हुसैन अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए बात करने। और नरगिस शबीर अली साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। अगर आप इजाज़त दें तो मैं तुमसे पहले बात करना चाहूँगी। नरगिस साहिबा, आपको क्या तकलीफ़ थी? मेरे पैरों में तकलीफ थी। अच्छा, घुटनों में? हाँ, बेइंतहा घुटनों में तो बेइंतहा तकलीफ। और आपकी ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किल होती थी इस तकलीफ की वजह से? काफ़ी सालों से, मुझे तकरीबन 8-10 साल से तकलीफ। 8-10 साल? और 2 साल से बहुत ही बढ़ गई थी मेरी तकलीफ। अच्छा, तो वो अर्थराइटिस का जैसे होता है तो वैसे ऑपरेशन के लिए कहा गया था आपको कि वरना नहीं बेहतर होगा? और एक्सरसाइजेज और थैलियाँ लटकाएं मिट्टी की और ये वर्जिश करें। हाँ, मुझे पता है मेरी एक फुप्पो को बहुत ही शदीद होता है। तो आपको कैसे पता चला कि पेन मैनेजमेंट, आप डॉक्टर सजाद के पास जाएं और उनसे पता करें? मेरे भतीजे डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि इनके पास जाए, ये नए आए हैं। अच्छा, पेन मैनेजमेंट। तो फिर अच्छा, तो आप उनके पास गई और आपने समझाया तकलीफ किस तरह? मुझे समझाया, सब देखा। तो आपको भी वही कोर्टिजोन के इंजेक्शंस लगे? ये तो डॉक्टर साहब को ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पेशेंट हैं आप तो, बिल्कुल ही ट्रस्टिंग वाली जो है ना, बिल्कुल ही परफेक्ट। आपको इंजेक्शंस एक लगे या आप काफ़ी सीरीज? में 5 लग गए मुझे। एक घुटने में 5 लग चुके हैं और फ़र्क आया? हाँ, तभी मैं अब दूसरे घुटने में भी लगा रही हूँ। सही। और कितना फ़ीसद फ़र्क आया है आपकी? 90% मुझे इस घुटने में फ़र्क हुआ है। और ज़िंदगी कितनी बेहतर हो गई होगी ना उससे? चलना फिरना और तकलीफ वगैरह हो कॉन्स्टेंटली। तो उसके बावजूद कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए आपको? नहीं, कोई नहीं ना, जो एक लोग बिलीव करते हैं ना, एक दहशत होती है लोगों के दिमाग में कि अरे भाई हम इंजेक्शंस लगवाएंगे तो फिर पता नहीं क्या असर हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, कुछ और ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? और कितने महीनों से ट्रीटमेंट करा रही हैं आप? 2 महीने हो गए मुझे ये पैर में लगे। अब इस पैर में अभी ये दूसरा लगा है, 15 दिन हुए। 15 दिन हुए, तो 2 महीने में तो पता ही चल जाता ना कि साइड इफेक्ट कोई है या नहीं। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। हुसैन साहब, आपको क्या तकलीफ थी? बेसिकली मेरे जो है ना पूरी लेग में प्रॉब्लम हुई थी, और जो है पेन जो है मेरे को फिंगर्स पे जो है ज़्यादा, क्योंकि वेट भी ज़्यादा था मेरा, और सेकेंडली मैं बेसिकली एक्सरसाइज भी प्रीवियसली करते रहा था, फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उसकी वजह से जो है वेट बढ़ने की वजह से जो है मेरे को पूरे लेग में जो है मेरे पेन हो रहा था। तो मैं नॉर्मली वो ब्रूफीन और जो टैबलेट्स आती हैं उसको लेके मैं, लेकिन दिन रात 3 घंटे आराम आया, फिर मसला ये कि वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गया था। फिर मेरे सेकंड लेग में भी जो है ना वो उसका अफेक्ट हो रहा था। तो मैं जो है फिर कंसर्न किया था, मैंने फिजिशियन से कंसर्न किया था, तो उन्होंने ऑर्थोपैडिक को रेफ़र कर दिया। जब ऑर्थोपैडिक किया तो उन्होंने सर्जरी के लिए कर दिया, एमआरआई करवाया, एमआरआई कराने के बाद उन्होंने सर्जरी के लिए वो कर दिया। बेसिकली मैं सर्जरी नहीं कराना चाह रहा था। और किस किस्म की सर्जरी करना चाह रहे थे? बेसिकली ये बैक के ऊपर जो है आपको सर्जरी करेंगे और स्पाइन के ऊपर सर्जरी करेंगे, तो मैं स्पाइन को जो है ना सर्जरी नहीं कराना चाहता, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी अगर उनसे लैकिंग हो गई तो वो फॉरएवर जो है ना वो बिल्कुल ही, बिल्कुल, क्योंकि स्पाइन के साथ तो आप डरते हैं कि कुछ हो ही ना जाए मसला। और तो उसके ऊपर जो है मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था, तो यही चल रहा था उसमें, लेकिन पेन जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा था। बाद में किसी की, क्योंकि इतना मैं क्लोज डॉक्टरों से मिलना पड़ रहा था, एमआरआई और ये वो, तो मुझे फिर किसी ने कंसर्न किया डॉक्टर आगा सज्जाद के हवाले से कि भाई ये है पेन स्पेशलिस्ट हैं, अभी आए हैं यूएस से, थोड़ा आप देख लें। तो क्योंकि यूएसए के हम तो वैसे इमीडिएटली इंप्रेस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, फौरन चलो कि भाई वो शायद वो जो है बेहतर तरीके से ट्रीट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो मैंने सोचा तो वो उस पर कवरिंग हुई पूरी 100% के
क्योंकि मैंने इन्होंने मुझे कहा था कि आपको इंजेक्ट करेंगे हम बैक साइड,